Assalamu alaikum students. Illustration number 16. The following is the receipt and payment account of Young Pensers Association Leh for the year ending 31st March 2020. Receipt and payment account for the year ended 31st March 2020. Number 1, receipt side, 2, balance brought down, then 2, subscription 2018-19, it's called previous year, 5,000. 2019-20, it's called current year, 83,000. And 2020-21, it's called next year, 2,000. Next, 2 entrance fees in bracket called capital receipts, 2 donation, 2 legacies, 2 interest on deposit, 2 picnic receipts. Now come to payment side. Buy stationery, buy postage, buy picnic expenses, buy salaries, buy annual general meeting expenses, buy traveling expenses, buy rent, buy charity, buy sundry expenses, buy fixed deposits, buy furniture, and last, buy balance carried down. Now come to adjustments. Adjustment number 1, outstanding subscription for the current year rupees 7,000. अब यहाँ पे क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या हुआ है, करंट ईयर दिया हुआ है, सो ऐड इन सब्सक्रिप्शन एंड सेकेंड इफेक्ट इज ऑन बैलेंस शीट असेट साइड. नेक्स्ट, furniture was purchased on 1st October 2019 and it is to be depreciated by 10% per annum. Okay, so first furniture amount is 50,000 and we purchased the furniture on 1st October, that means after 6 months. Okay, because our year starts from 1st April and ends on 31st March. So October means 6 months. So we purchase furniture amounting rupees 50,000 for 6 months. So 50,000 for 10% for 6th month. तो कितना है उसका अमाउंट, 2,500. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट रुपीज़ 7,500 इज अ इनकम. सो क्या करेंगे, पिकनिक रिसिप्ट में हम इसे ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट. Adjustment number 4, stock of stationery on 1st April 2019 was rupees 350 and 31st March 2020 was rupees 1,700. सो इसे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की पेमेंट साइड पे दिया हुआ है बाय स्टेशनरी. सो लुक यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट जो दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 1st April 2019, इट्स कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. कितना था, 350. एड परचेसेस स्टेशनरी 8,000, ये कहाँ पे है, पेमेंट साइड स्टेशनरी जो लिखा हुआ है वो, लेस क्लोजिंग स्टॉक 1,700. सो जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा वो हमारा होगा स्टेशनरी यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर. एडजस्टमेंट नंबर 5, 50% ऑफ द लेगेसीज and full amount of donation are to be capitalized. लेगेसी का 50% और पूरा का पूरा डोनेशन हमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है. क्लियर. लास्ट, विद द अबव इंफॉर्मेशन you are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020. लिसन स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ट्विस्ट है. यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट बनाने को नहीं कहा गया है. क्लियर है, तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे. ओनली वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट्स इट. एंड आवर क्वेश्चन एंड्स ऑन सरप्लस आइदर डेफिसिट. हमारा क्वेश्चन कहाँ ख़त्म होगा, एक तो हमें सरप्लस होगा या तो हमें डेफिसिट होगा.
ओके, बिकॉज हमें यहाँ कोई भी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट टैली, कैपिटल फंड, देन सेकंड इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स, ये सब को कोई भी टेंशन नहीं है। क्लियर है? बिकॉज मैनी टाइम्स क्या करते हैं, भले से क्वेश्चन में नहीं कहा गया है फिर भी स्टूडेंट बनाते हैं। सो लिसन स्टूडेंट, लिसन केयरफुली, हमें एक बार नहीं कहा गया है तो हमें कोई भी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, बस सरप्लस आइदर डेफिसिट जो भी आएगा वो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? नाउ मूव फॉरवर्ड टू द आंसर कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। First heading in the book of Young Pensioners Association Leh Income and Expenditure Account for the year ending 31st March 2020. First start from expenditure side. Number 1, to stationery, because there is an adjustment on stationery, so we write to stationery. Underline number 1, opening stock shows on the adjustment number 4, so we write opening stock, inner column 350. Add purchases, this shows on payment side. Number 1, buy stationery 8000, so add purchases, inner column 8000, so 8350 is equal to 8350 less closing stock shows on adjustment number 4, amount 1700, so 8350 minus 1700, so outer column 6650, so stationery used for current year is 6650. Next, postage, outer column 1000. To picnic expenses, outer column 8000. To salaries, outer column 8000. To annual general meeting expenses, outer column 4500. To traveling expenses 7500. To rent, outer column 12,000. To charity, outer column 7,800. To sundry expenses, outer column 3,200. To depreciation on furniture, outer column 2,500. अब ये 2500 कहाँ से आया? सो फर्नीचर अमाउंट इज 50,000. 50,000 फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1st October. हमने अक्टूबर में परचेज किए, मीन्स वी परचेज फर्नीचर फॉर 6 मंथ. सो 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000, राइट? फॉर कंप्लीट होल ईयर फॉर 12 मंथ इज 5,000. सो उसका हाफ कितना होगा? 2,500. क्लियर है? Now come to income side. Number 1, by subscription, there is an adjustment on subscription, so we write in inner column 83,000. Add outstanding subscription, which was shows on the adjustment number 1, outstanding subscription for current year rupees 7,000, so we write add outstanding, inner column 7,000. 83,000 plus 7,000, outer column 90,000. उसके अलावा सब्सक्रिप्शन 2018, 19 एंड 2021 हमें सब इग्नोर करना है, कुछ भी नहीं लिखना है. वाई? बिकॉज वी वोंट प्रिपेयर एनी बैलेंस शीट. क्लियर है? नेक्स्ट, बाय लेगसीज, देयर इज एन एडजस्टमेंट ऑन लेगसीज, सो राइट इन इनर कॉलम 40,000 लेस 50% कैपिटलाइज्ड shows on the adjustment number 5. 50% of legacies and full amount of donation are to be capitalized. Okay, so legacies में से क्या करेंगे? less 50% capitalized 20,000. 40,000 minus 20,000, outer column 20,000. Next, by interest on fixed deposit, outer column 7,000. By picnic receipts, there is an adjustment on picnic receipt, so we write in inner column 10,000.
and adjustment number 3 shows outstanding picnic receipt rupees 7,500. So we add outstanding income. So in picnic receipt we add outstanding, inner column 7,500. So 10,000 plus 7,500, in outer column 17,500. After completion of all the items and adjustments, we have earned surplus. So I write in expenditure side to surplus amount, outer column 73,350, or in other word we can say excess of income over expenditure. surplus को अदर वर्ड्स में क्या बोलते हैं? excess of income over expenditure. in outer column 73,350. okay, now as you see there are a working note of depreciation, how we calculate depreciation on furniture, as well as how we calculate the picnic receipts. Clear students? So now your question is over. Why? Because we won't prepare any. अभी हमें इस क्वेश्चन में क्या मिला? surplus, and surplus is our final answer. Okay, so inshallah in next lecture we move forward to the next question. Thank you. Assalamu alaikum.